advanced. Now, I want to come to this common topic that we have, types of housing and typologies of housing. जो types of housing, there's a very minor difference between both. Okay, दोनों types को ही, मतलब they talk about what are the kinds of housing, but types of housing talks about their physical structure, number of units, category of building. Okay, so यहाँ पे rural housing, urban housing, mass housing, slum housing, these are the types of housing. Whereas typologies, okay, I'm just going to go to the next slide and come back to this. So typologies talk about a more architectural and urban planning term, okay, where form, arrangement, उसके relationship जो है, वो सबके हिसाब से divide होता है. So rural housing क्या है, जहाँ पे wherever it is located in rural areas such as villages, towns, okay, it's a rural housing. Urban housing is where you have a higher population density. Automatically, जो housing shortage का phenomenon मैंने बोला, it's always persisting. So urban housing is one such thing. फिर mass housing में बहुत सारे units, hundreds of 200s and 300s or thousands of units are placed together. उसमें कम एरिया होता है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम होता है, ईडब्ल्यूएस अफोर्डेबल हाउसिंग के कैटेगरीज भी आ जाता है इसमें, ठीक है. फिर स्लम हाउसिंग जो है, very densely packed areas, okay, and all of these housing units are very deteriorated condition, मतलब उनकी conditions अच्छा नहीं होता है, they're all settling there because they don't have another option, वैसे वाले scenarios होता है. Okay, so these are just some types of some typologies and types of housing. So you have single detached, semi-detached, studio, narrow lots. So these are some of the ones in other countries. So ये सारे इंडिया में applicable नहीं है, but काफी ज्यादा हो जाते हैं. So row housing is applicable in India. Courtyard house is applicable here. Mid-rise apartment, high apartments located on like courtyard housing, stacked row housing, fourplex housing, all of these are applicable here. Okay. Then when you come to the typologies of housing, so we are looking at different forms, right? We're looking at, so high-rise apartment is one type of a form where you have multiple stories all, okay, उसमें all of these features, amenities and everything are developed together in a cluster. फिर you have shop houses, मतलब mixed use जो बोलते हैं हम, where you have like business and for living, okay, and then you have long houses, मतलब these are some typologies. सारी हम देखने, मतलब कुछ कुछ टाइप्स हम देख चुके होंगे, कुछ कुछ टाइप्स बाहर, इंडिया से बाहर भी है, कुछ कुछ टाइप्स इंडिया में नहीं है. इट डिपेंड्स, ओके. तो काम हम कहाँ पे रह रहे हैं, वेयर वी हैव सीन ऑल ऑफ दिस, या कभी कभी थियोरेटिकली ओनली वी नो ऑल ऑफ दिस आल्सो. फिर है टेरेस हाउस विच इज वेरी स्मॉल, टाउन हाउसेस. सेमी डिटैच्ड हाउस में क्या होता है, एक कॉमन वॉल रहता है. फिर मैंशंस आर स्लाइटली बिगर देन बंगलोज, ओके, एंड ह्यूज पार्सल ऑफ लैंड में होता है. बंगलोज, हाँ, bungalows, mansions are all the higher income category के housing. Cluster houses, huge build up होता है. Then in clusters, मतलब कुछ कुछ units को मिला के 4 5 units together या 6 8 units together are clubbed together to form a cluster. And कभी कभी क्या होता है, ये group housing में cluster को एक unit बना देते हैं. मतलब okay, so when I say this, when you see some examples of housing, आप ये देख सकते हो, मतलब एक होगा, लेट्स से दिस इज वन क्लस्टर, ओके, इसमें 4 यूनिट का क्लस्टर बन गए. अभी क्या करेंगे, ये 2 क्लस्टर को या 3 क्लस्टर को साथ में डाल देंगे एंड दिस विल बिकम 1 यूनिट, ओके. फिर ये यूनिट को मल्टीप्लाई करके दे विल कीप मॉडरेटिंग इट, ऐसे टिल्ट करके यू ऑल हैव डन हाउसिंग इन वन ऑफ योर सेमेस्टर्स आर्किटेक्चर में. आपने किया होगा, आपने देखा होगा केस स्टडीज एंड ऑल दैट, ओके. सो we'll take a look at some of them also. So, you must have heard of RNA housing, you might have heard of Asian Games Village, Habitat 67, etc.